Welcome to Vishika classes. Our today's topic is full forms. Let's start discussing some important full forms according to the competitive exams point of view. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first full form that we are going to discuss today is CAT. What is the full form of CAT? C-A-T. The full form of CAT is Common Admission Test. C stands for common, A for admission, T for test. Common Admission Test. It is a basically, what is a CAT? Basically, CAT is a national level entrance exam. ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो कि किन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है. इट वाज कंडक्टेड बाय द आईएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. आईएम्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और जो कंडक्ट होता है फॉर द एमबीए प्रोग्राम. जो स्टूडेंट्स एमबीए करना चाहते हैं वो कैट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और कैट का एग्जाम देते हैं. ओके जो इसमें अपियर कर जाते हैं दे गेट वेरी इजी एडमिशन द एमबीएस कॉलेज. आईएम्स के अंदर एमबीए में उन्हें बहुत ही इजीली एडमिशन मिल जाता है. नाउ next is GATE. What is the full form of GATE? G-A-T-E. The full form of GATE is G for graduate, A for aptitude, and the T for the test. Graduate aptitude test. And this is as similar to the CAT. The difference is that CAT gives admission for the MBA programs, but the GATE is the entrance exam for the science and technology sector. मीन्स गेट किसके लिए होता है? गेट जो होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, मीन्स इंजीनियरिंग के अंदर या फिर हायर एजुकेशन जो है, जो स्टूडेंट अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं. ओके जैसे गैट होता है, कैट होता है वो एमबीएस के लिए होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस के लिए होता है. जो गेट होता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वी कैन से दैट फॉर द इंजीनियरिंग क्लासेस. ओके now next is the IAS. What is the full form of IAS? Here I stands for Indian, A for administrative, S for service. Indian Administrative Service. What does it do? It provides the administrative arms of the All India Service of Government of India. All India लेवल पे होता है बेसिकली. आईएएस प्रीलिम्स कहते हैं इसको. आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑल इंडियन सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में स्पेशली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स में अगर कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है या कोई भी जॉब करना चाहता है वो स्टूडेंट इसमें जॉब एंट्रेंस क्लियर करता है. नेक्स्ट इज द आईपीएस. What is the full form of IPS? Here I stands for Indian, P for police, S for service. Indian Police Service. What does it do? It is the top position in the power of career and the prestige. पावर अगर आपको टॉप लेवल की चाहिए, कैरियर आप अपना टॉप लेवल बनाना चाहते हो, आपकी प्रेस्टीज आप चाहते हो कि टॉप लेवल पे हो, तो ये बेसिकली आईपीएस सर्विसेज. ये भी ऑल इंडिया लेवल पे ही होता है सेम एज दैट ऑफ आईएएस. आईएएस की तरह आईपीएस भी सेम उस पे ही होता है ऑल इंडिया लेवल पे. द डिफरेंस इन बिटवीन द दोस टू इज दैट आईएएस gives a job regarding administrative arms, but the IPS gave the jobs regarding to the police service. जो आईएएस है वो जो जॉब्स ऑफर करती है वो करती है एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स के विद रिस्पेक्ट में, लेकिन जो आईपीएस है वो करती है हमें पुलिस सर्विसेज के लिए जॉब्स प्रोवाइड. नेक्स्ट इज द यूपीएससी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? Here U stands for Union, P for Public, S for Service, C for Commission. Union Public Service Commission. And what does it do? It is responsible for the recruiting the candidates at the all India level for the central services, for the cadre services, for the armed force services और by the Union of India. ये भी यूपीएससी भी आईएएस और आईपीएस की तरह ही हमें ऑल इंडिया लेवल पे ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है. जो सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल सर्विसेज, कैडर सर्विसेज और जो आर्म्ड फोर्सेस की जो सर्विसेज हैं, यानी कि आईएएस की सर्विसेज या आईपीएस की सर्विस. आईपीएस इज द आर्म फोर्स सर्विसेज and the IAS is the administrative services.
दोनों में से किसी में भी अगर आपको क्लियर आउट करना है या दोनों में से किसी को भी आपने कैटेगराइज चूज किया कि भैया मुझे तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में मैं सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स आल्सो. ओके. नेक्स्ट इज अ नेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेट? NET. Here, N stands for national, E for eligibility, T for test. National eligibility test. And what does it do? It is the entrance examination for the post graduation for who are pursuing PhD और द टीचिंग कैरियर. जो टीचिंग कैरियर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर जो है जो पीएचडी करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है दैट इज अ नेट. नेट किया जाता है. जो टीचिंग कैरियर के लिए होता है दैट इज अ यूजीसी नेट और द एनटीए यूजीसी नेट. नेक्स्ट इज अ नीट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? NEET. N stands for national, E for eligibility, come E for entrance, T for test. National eligibility come entrance test. And what does it do? It provides a medical aspirants or the admissions to the medical institutes. बेसिकली जो नीट एग्जाम्स है वो क्या करता है मेडिकल एस्पिरेंट्स के अंदर या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर इफ यू वांट टू डू द कंप्लीट योर कैरियर, अगर आप अपना मेडिकल लेवल पे अपना कैरियर कंप्लीट करना चाहते हैं देन यू हैव टू गिव द एग्जाम ऑफ नीट. तब आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है. नेक्स्ट इज SSC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSC? Here, S stands for staff, S for selection, C for commission. Staff Selection Commission. And what does this do? क्या करते हैं? It is an important organization which recruits the experts for the various ministries, departments and the offices. Staff Selection Commission basically क्या है? एक बहुत बड़ा लेवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिक्रूट करता है हर एक पोस्ट में, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पोस्ट हो, डिपार्टमेंट लेवल पोस्ट हो या फिर आपकी ऑफिस लेवल पोस्ट हो, कोई भी लेवल की पोस्ट हो, सभी के अंदर रिक्रूटमेंट करने के लिए जो हायर अथॉरिटी है दैट इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट इज GDP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP? Here, G stands for gross, D for domestic, P for product. Gross domestic products. And what does this do? It basically monitors the value or the market value of the finished goods and the services at the country border level in the particular time period. जीडीपी बेसिकली क्या करती है? ये मॉनिटर करती है. कौन सी मॉनिटर क्या करती है? जो मार्केट वैल्यूज होते हैं, जो फाइनल गुड्स हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आ रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू क्या होगी ये उसको एनालाइज करती है. ठीक है. और ये कौन से लेवल पे करती है? एट द कंट्री बॉर्डर लेवल के लिए कि भैया इतने टाइम के लिए इससे जो भी हम लोग लेंगे प्रोडक्ट वो इस लेवल का लेंगे या इस रेट पे. तो जीडीपी जो होती है बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. नेक्स्ट इज ITI. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITI? Here, I stands for industrial, T for training, I for institute. Industrial Training Institute. And what does it do? It is a in this the government organization is responsible for providing the industrial related educations for the school students or the higher than the school students. जो ITI है बेसिकली ये क्या करती है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है जो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल रिलेटेड वर्क जो भी होते हैं उसके अंदर ट्रेन करती है. कौन से स्टूडेंट्स को? द स्टूडेंट्स विच हैव कंप्लीटेड देयर 10th एग्जाम्स. मिनिमम जो है इसमें क्वालिफिकेशन वो 10th है. 10th एग्जाम्स कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट्स ITI में जा सकते हैं और फॉर द हाई स्कूल्स भी मींस प्लस टू के आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लस टू आल्सो दे कैन गो टू द ITI. नेक्स्ट इज द TRP. What is the full form of TRP? T means target, R stands for rating, P for point, target rating point, or you can say that television rating point. And what does it do? It basically monitors how the TV program is coming on the screens or the most of the viewers, how many viewers are watching that television program on their TV screens.
ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि कोई भी जो टीवी प्रोग्राम आपका चल रहा है, टीवी सीरियल्स आपका चल रहे हैं, आइदर इट इज एनी competition level shows or the your daily routine, the daily soaps also, and even anyone कोई भी है, तो कितना टाइम तक जो व्यूअर्स हैं उसको अपने स्क्रीन के ऊपर, जो टीवी स्क्रीन है बेसिकली, उसको वॉच आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द नासा. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? NASA. As you all know that the NASA is basically a United States government space organization. जो नासा है बेसिकली क्या है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है नासा. तो हियर नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एस फॉर स्पेस, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. National Aeronautics and Space Administration, and was started on the 1st October 1958 by the US government. US government ने 1958 1st अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया था. नेक्स्ट इज सीईओ. What is the full form of CEO? Here, C stands for Chief, E for Executive, O for Officer. Chief Executive Officer. And what does it do? Basically, it a chief of जो executive officer होता है वो कौन होता है? It is a senior most officer of the particular particular company. जो भी कंपनी की बात करें उसमें जो senior most officer होता है, that is the CEO of that particular company. It can take any crucial decision for the organization. वो अपनी organization के लिए कोई भी बड़ा सा बड़ा decision भी ले सकता है. He has that power. Next is the MLA. What is the full form of MLA? Here, M stands for member, O for of, L for legislative, A for assembly. Member of legislative assembly. And what does it do? The member of legislative assembly was appointed by the voters of the Indian government. जो इंडियंस हैं, जो हम लोग इंडियन पीपल्स हैं बेसिकली, वो वोट के थ्रू हम एमएलए को चुनते हैं, अपने एमएलए को अपॉइंट करते हैं. वोटर डोमिनेशन होता है इसके लिए. एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज बेसिकली फ्रॉम द स्टेट वाइज. ये स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं. ओके. यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दैट इज इन द कैटेगरीज ऑफ द एमएलएस. एमपी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी? MP stands for the Member of Parliament, and these also are appointed by the Indian peoples only. Indian peoples द्वारा ही nominate होते हैं, and these are the basically the Member of Parliament from the Lok Sabha department. Lok Sabha. Next is the CID. What is the full form of CID? Here, C stands for Crime, I for Investigation, D for Department. Crime Investigation Department. बेसिकली क्या है ये? इट इज एन इंटेलिजेंट विंग ऑफ द पुलिस फोर्स. पुलिस फोर्स की जो है ये इंटेलिजेंट विंग होती है. इसको ये जो भी जो मतलब केसेस जो पुलिस ऑफिसर्स इजीली हैंडल नहीं कर पाते, तो वो सीआईडी को रेफर कर दिया जाता है, तो वो उस केस को देखते हैं. द मेन हेड कौन होता है इसका? एडीजीपी, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस जो होता है, वो इज द हेड ऑफ द सीआईडी. वो सीआईडी का हेड होता है. नेक्स्ट इज द सीबीआई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई? C stands for Central, B for Bureau of, I for Investigation. Central Bureau of Investigation. It is a basically domestic crime investigation agency. ये domestic crime agency है. Okay. ये जो ऑपरेट करती है जुडिशरी लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल लेवल्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस और द मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस पे, ये जो सीबीआई जो है ये वर्क करती है. अंडर दैट लेवल ये जो वर्क होता है. नेक्स्ट इज द एनडीए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? Here, N stands for National, D for Defense, A for Academy. National Defense Academy. And what does it mean? बेसिकली क्या है कि इंडियन आर्म फोर्स को ज्वाइन करना, और उसमें आपको अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है. एग्जाम्स. इट गेव द ट्रेनिंग फॉर द all the three services, that the Indian Navy, Indian Army, and the Indian Air Force.
ये तीनों के लिए अगर किसी भी आपने सर्विसेज के अंदर यू वांट टू डू द जॉब, यू वांट टू डू द सर्विस, देन यू हैव टू गिव द एनडीए एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो ये तीनों कैटेगरीज को ही मतलब आगे आप क्या चूज करना चाहते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, यू कैन चूज दैट। नेक्स्ट इज द आईसीयू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? Here, I stands for intensive, C for care, U for unit. Intensive care unit. And what does it mean? The patient's very very critical. जो patient बहुत ज़्यादा critical है, they need the special care or they need the intensive treatment. They are keep under the observation in the ICUs. जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, उन पर पेशेंट्स को आईसीयू में रखा जाता है। वहां पर उनको स्पेशल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं सो दैट दे कैन रिकवर आउट वेरी इजीली। नेक्स्ट इज द पीडब्ल्यूडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूडी? पीडब्ल्यूडी, P for public, W for work, D for department. इट इज एन अगेन गवर्नमेंट एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल क्या करती है, बिल्डिंग्स को देखती है और उनकी मेंटेनेंस को भी रिकवर आउट करती है कि कैसे उनकी मेंटेनेंस रखी जा रही है। वे पब्लिक जो जो बेसिकली जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शंस का, हाईवे की कंस्ट्रक्शंस का, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शंस का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज की, और भी जितने भी हमारे जो डे टू डे हम जो गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहे हैं उन सबको कौन टेक कर करता है, उन सबको टेक कर करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। उन सबकी मेंटेनेंस को और सबको मेकिंग में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज एनओसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनओसी? N stands for no, O for objection, C for certificate. No objection certificate. No objection certificate नाम से ही पता चल रहा है what does it mean? It means it is a legal document which is given by any organization so that it means that there is no issue to break this. इस चीज को बनाने में कोई भी इशू नहीं है, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए तो what you have to take? You have to take the NOC from that particular person or from that particular organization. फिर आपको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर पर्सन से या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से तो उससे एनओसी लेनी पड़ती है कि आप इस पे जो भी काम करोगे तो उससे आपको उससे उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज द एसडीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएम? Here, S stands for sub, D for divisional, M for magistrate. Sub-divisional magistrate. And what does it mean? It is formed by the dividing the district. ये SDM जो है डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर देते हैं। सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं कंट्रोल करता है, बेसिकली कौन करता है, एसडीएमसी कंट्रोल करते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंडर जो लेवल होता है उसको कहते हैं सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट। ओके, तो जो भी वहां के जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट ने कुछ पास किया तो वो एसडीएम ही कंट्रोल करेगा। ओके, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसके कुछ सब सेक्टर्स या ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, उन सब को जो हेड करता है वो एसडीएम करता है। ओके, नेक्स्ट इज द आरटीओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीओ? Here, R stands for regional, T for transport over office. Regional transport office, or you can say that R for road, T for transport over office. Road transport office. Basically क्या करता है? It provides the driving license, it provides the vehicle registration document which are running on the road. जो भी रोड पे रन कर रहे हैं उनको जो आरसी देने का काम आरटीओ करता है, और जो उसको ड्राइव करेगा मींस द ड्राइवर आल्सो गेट द लाइसेंस फ्रॉम दिस आरटीओ डिपार्टमेंट। उसको जो ड्राइवर को भी जो लाइसेंस है वो भी आरटीओ डिपार्टमेंट ही देता है। नेक्स्ट इज द इसरो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ISRO। Here, I stands for Indian, S for space, R for research or for organization. Indian Space Research Organization. And what does it do? It is a basically space organization of the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी स्पेस में जा रहे हैं उससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलेगा और क्या क्या हम लोग उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, वो सब कुछ कौन हैंडल करता है, इसरो करता है। ISRO। That's all for the today's class. The rest of the full forms we will discuss in the next class. Thank you.